माड़े चैनल की सब्सक्राइब करी किनो बेल आइकन की दबाई छोड़ो कि तुसा की माड़े वीडियो नी अपडेट मिलनी रहे। अस्सलाम वालेकुम माड़ी पटवारी किचन फैमिली, मैं उम्मीद करनी आं सारे ठीक हो सो। अल्लाह तो रसूल फजल तो करम नाल अल्लाह ताला असा सारे खुशबाश रखन, दुनिया नी हर दुख तकलीफ से दूर रखन, नाले अपने हिफ्स अमान च रखन। अज अस बना लगे मुगलई मटन कढ़ाई। उस दसने कि उसने केड़ी केड़ी चीज़ पैनी तो वो किस तरह बनाई ना। Assalamu alaikum to all of our beautiful family. Today we are going to be making Mughlai mutton karahi. So we're going to show you what ingredients we need and how we make it. So let's get started. जी असा इत्थै चाहिदा पहलू गोश्त शोल्डर नासा आंदा वै 1.5 किलो। So here we have 1.5 kg of shoulder meat. Obviously this is mutton. इत्थै असां चाहिदे मसाले जेह्ड़े असां उसकी मैरिनेट करसां। इत्थै असां चाहिदी 1 टेबल स्पून असां चाहिदा लूना ना। So that's 1 tablespoon of salt. 1.5 चम्मच असां चाहिदे बसार। That's 1.5 tablespoons of Kashmiri chili powder. एक निक्की चम्मच असां किंदी हल्दी पाउडर। That's 1 teaspoon of turmeric powder. 1 टेबल स्पून असां इत्थै चाहिदी धनिया पाउडर। 1 tablespoon of coriander powder. 1 टेबल स्पून इत्थै असां चाहिदा जीरा पाउडर। And we also have 1 tablespoon of cumin powder. तो ये असां सारे मसाले बस इसने तो इसकी मैरिनेट करसां। So what you want to do is add all of these spices into the mutton and we're just going to marinate it. 10 असां इत्थै चाहिदे से थूमैनियां गुलियां तो 3 पीस असां किंदे से अदरक ने तो असां उसकने जेह्ड़े ना पेस्ट बनाई किंदी है। So here we have a ginger and garlic paste that we made. We used 10 fresh garlic cloves and we used 3 fresh ginger pieces. So we just blended them together and made a paste. So you want to add that as well into the meat and we're going to give it a good mix and make sure that the meat is coated and mixed well with all of the spices. असां इसकी करसा सारे की मिक्स। इसकी चंगी तरह मिक्स करी किनसा ताकि सारे जेह्ड़े मसाले ने इसने विच मिक्स होई जा। जी मसाला असां करी किंदा मिक्स तो हुण असां इसकी रखसा 20 मिनटां वास्ते फ्रिज च। तो 20 मिनटां तो बाद जेह्ड़ा ना फिर असां तुसेंगी दस्सने कि अग्गें असां क्या करने आ। So we've marinated the mutton meat now. We're just going to refrigerate it for about 20 minutes. असां इसकी सिर्फ 20 मिनट रखसा कियां कि असां हुन ज़ाहिर है वीडियो नहीं मारूं असां जेह्ड़ा इसकी बनासां तो तुसां जेह्ड़ा इसकी बनाना होवै तो इसकी तुसां ज़्यादा देर भी रखी सकने हो। घंटा रखो 2 घंटे रखो जितनी देर तुसां रखसो उतना देर जेह्ड़ा ना इसना टेस्ट जेह्ड़ा ना इसना जायका ज़्यादा होसी। We're only going to be refrigerating and allowing the meat to marinate for about 20 minutes because we are short on time and because we are showing you how to make it. So when you do make it, just make sure that you marinate it for a longer period of time because then the flavors will develop and it'll taste really nice when you make it. So yeah, just make sure that you marinate it for a couple of hours or even you can also marinate it overnight, which will also develop and intensify the flavors more. And yeah, so we're just going to be marinating for about 20 to 30 minutes and then we'll show you the next step. जी असां इत्थै चीज़ां चाहिदियां ना असां इन्हां दी बनासां पेस्ट तो तुसें दस्सने कि असां कितनियां कितनियां जेह्ड़ा चीज़ां इत्थै किंदियां। So here we have a bunch of different ingredients. We have a couple of spices and we also have cashew nuts as well. We're going to be making a paste out of these ingredients. So we'll go through it step by step and show you what ingredients we have. 15 इत्थै चाहिदे असां cashew nut। So here we have 15 whole cashew nuts. You can also use them in halves as well. एक अद्धा टोटा असां चाहिदा जायफल ना। And we have half a piece of nutmeg. एक पीस असां चाहिदी इत्थै दालचीनी नी। 1 cinnamon stick.
4 पीसां सा चाहिए किंदा था जवत्रीनियां We have 4 pieces of mace. 6 to 7 चाहिए किंदे असियां ग्रीन लाचियां So we have around about 6 to 7 pieces of green cardamoms. 10 to 11 असा चाहिए किंदे ना लौंगा ने पीस And we have around about 10 pieces of cloves. Since they are quite small, that's why we've used quite a bit. So if you have bigger ones, you can use less as well. So we have, because the ones that we are using are a bit small, so we have around about 10 pieces of cloves here. So now we're going to blend all these ingredients together and make a fine paste. इसकी सा ना ब्लेंड करने ए होल ही बासा ता ए जड़ियां चीज़ां ने ना ऐसा ब्लेंड करी किन्ने ता जला सा पेस्ट बनाई सा फिर से दसने अगला स्टेप सा दसने फिर. So we can't blend the cinnamon stick, so we're just going to leave the cinnamon stick, and we're just going to blend all of these ingredients together and make a fine paste with this. But then we'll just use the cinnamon stick as it is. जी असा था चाहिए किंदे 4-5 तेज पत्ते ता ए असा बाल लगे आंडी च पहलू ता नाल ही असा दालचीनी ने टुकड़ा बासा ना जरा सही दसया सी. So we've approximately added around about 3 to 4 tablespoons of ghee, and the ghee's heating up really nicely now. So we've added in around about 4 to 5 dry bay leaves, and we've added in our cinnamon stick now. We're just going to saute them for a few minutes until they start to sizzle and release their flavor. जी नुसा तकने हो के तेज पत्ता ता दालचीनी सा बाई रहा ता उन्हें सा बाल लगे गोश्त गोश्त ने जो बोटियां या ये सारियां जो एक करी दसा जरा आंडी बाई As you can see, the ghee is really nice and hot now, so we're just starting to add in all of the meat inside, and just start adding it a little bit at a time. And then we're just going to let the meat rest and sit in the ghee as it is, and we're not going to stir it or move it around because we don't want to disturb the mixture that is on it. So you're just going to wait for a few minutes until one side has started to cook and turn golden brown, and then we will swap the sides and give it a good mix just so that it gets cooked properly and evenly. मीट बाई किंदा आंडी ता उन असा इसकी रहंदे सा 1-2 मिनट वास्ते ता गैस असा जड़ा ना मीडियम पर रखया ता फिर असा इसकी थोड़ी देरी बाद ना 1-2 मिनट बाद फिर असा इसकी अलासा जे असा 1-2 मिनट हो गए ने था ता उन असा चंगा इसकी लाई किनसा ता फिर असा इसकी जड़ा ना गोश्ता की इसका की होगी जड़ा भुनी किनसा ता ए ऑप्शनल है कि तुसा की ओ यूज करो या तेल यूज करो, तुसा ने अपनी मर्जी है जो कि तुसा यूज करने हो तुसा करी सकते हो, कि तुसा इस्तेमाल करने हो अपने खाने च तुसा वो चीज़ जी है इस्तेमाल करी सकते हो. तो क्योंकि असा घी खाने तो इस वास्ते असा घी जड़ा पाया है. तो घी जड़ा ये एनिमल नहीं है, वेजिटेबल घी है. So as you can see, we've just mixed the meat now, and we are using vegetable ghee. We are not using any like animal ghee. We use vegetable ghee, and sometimes we do use vegetable oil as well. It really depends. We switch between the two. We use vegetable oil and ghee. So you could use whatever you like, really. Just use whatever you have available in your house, whatever you guys cook your food with. It doesn't really make a difference. We're just going to stir all the meat now, and then we're just going to cook it without adding any water. ऐसा इसकी पुलसा 5-10 मिनट चंगी तरह जिचा जिया इसना सारा जड़ा बोश हो जड़ी है ना इसनी ख़त्म ना हो जाए तो किसी पता है मीट नहीं स्मेल होनी है तो फिर उसने तो बाद जड़ा ना सा कर सकी अगला स्टेप जड़ा दसने है. So you just want to make sure that you continuously stir the meat and cook it for around about 10 to 15 minutes. You want to make sure that there's no meat smell in there. So you want to make sure that the spices release their flavor and the meat is cooked really, really well. मटन जरा सा गोश्त बाया सा उस अपना पानी छोड़िया वा ता उन असा इसकी पुलसा
इचा जियां जिचा जियां इसना सारा पानी जड़ा सुक्की ना जाए तो फिर तुसें कि जड़ा ना अगला स्टेप जड़ा तुसें दसने आं. So as you can see, the meat has released its water, and you just want to make sure that you put the gas onto medium, and you want to just make sure that the water evaporates, and we're going to cook it until the ghee rises to the surface. So once the ghee rises to the surface, we'll know that the meat is cooked. ये रेसिपी जी है तुसा चिकन भी बनाई सकने हो तो कोई ज़रूरी नहीं खाम खा जरा तुसा मटन बनाओ तो जे मटन अवेलेबल है तो मटन बनाओ तो मटन अवेलेबल नहीं है तो तुसा जरा है चिकन भी बनाई सकने हो तो हूँ तुसें दसने बाद नैक्सट स्टैप जरा इसना पानी जरा सारा सुक्की रहा तो फिर अगर तुसें दसा तो क्या कर जी तुसा तकने हो कि हांडी ना पानी जरा सारा सुक्की गया तो असा इसकी अजय स्टिल भुनने पे हाँ तो एक मिनट वास्ते और असा इसकी भुनसा तो फिर असा इसने विच ऐड करसा टमाटर पेस्ट जरा असा बनाया और ऐड करसा. So the water has evaporated now from the meat, and as you can see, the ghee has risen and has come on top of the surface. So we're just going to give it a few seconds, and then we're going to add in our tomato puree that we have made. So all we did was we just blended 3 tomatoes, made like a puree. We didn't add any water to it because, as you know, there's already water in the tomatoes, so we don't need any extra moisture. So you just want to make sure that you give it a good mix for about 2 minutes. So you just want to make sure that you continuously mix and cook the meat and the tomatoes together, so that way the tomatoes will turn nice and soft. Also going to add in our fried onion mixture that we made. All we did was we used 1.5 cup of fried onions and we just blended them. ये जरा कप असा यूज करने या कप असा 1.5 कप किंदा सा तो इसने जैसा ये मैच करी तो फिर असा बाया सा तो ब्लेंड किया तो 1 कप रह गया सा तो हूँ असा इसके भी जरा नाल ही भुनी किनसा तो प्याज जरा असा पहलू फ्राई करी किंदा सा. So yeah, just make sure guys that you fry the onions and then blend them and make a paste out of it, or you can also use the shop bought one and then just grind it quickly and make a paste. Just takes literally a few seconds. So you want to make sure that you give everything a good mix. जी तुम तकने हो कि असा प्याज भी जड़ा रोस्ट होया वा वो भी असा बाई किंदा तो टमाटर भी असा बाई किंदे तो स्टिल असा इसकी जड़ा 1-2 मिनट भुनसा तो फिर उसने तो बाद जड़ा फिर असा तुसें की अगला स्टेप दसने इंशाल्लाह. ये असा रेसिपी तां बनाने कि माशाल्लाह ईद अच्छनी पी है तो असा ने भैन भरा जेड़े ईदा पर एसन अपने फैमिली नाल बेसन खलसन खासन पीसन तो असा है चलो सोनी जी एक रेसिपी अपने भैन भरा नाल भी शेयर करा तो चलो वो भी बनासन मज़े वाली रेसिपी है तो खासन. असा तो काफ़ी टाइम बनाने तो असा ने बच्चे भी पसंद करने तो माशाल्लाह तो असा है चलो अपने फैमिली फ्रेंडा नाल भी रेसिपी जी असा शेयर करी कि ना तो वो भी बनासन तो खासन माशाल्लाह. So we thought we would share this recipe with you all as Eid is coming in literally a few weeks time. So we thought it's a really nice and tasty, quick and easy recipe that you all could make and enjoy with your family and friends at home. It's a nice way to treat yourself and your family and friends with a nice dish. So it tastes absolutely amazing, guys. Trust me on this. We've had it a good couple of times and it's like a favorite in our house. And it also tastes like wedding gosht. You know, if you ever go to a shadi and you have gosht there with naan, that's what it tastes like. It tastes absolutely amazing. I'm sure you guys will love the recipe. Don't forget to hit that subscribe button if you haven't already, and like and share with all of your family and friends. And let's welcome more family members. जी उनसा तकने हो के उनसा टमाटर भी ता प्याज भी असा बाई ता भुनी रहे को 2 मिनट तो उनसा बाल लगे पेस्ट जरा असा नया सी काजू ना
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਚੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀਆਂ ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਪੇਸਟ ਆ ਇਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈ ਕੀਤਾ। So as you can see, we have been continuously cooking and stirring the meat, the onions and the tomatoes together, and now we've added in our cashew paste that we made. So it's got your nutmeg, it's got your mace, your cloves, your cardamoms in there along with the cashew. So we've made a paste, we've added water in it and blended all the ingredients together, and we've added that in. So you just want to make sure that you cook this now for a few minutes along with the other ingredients. क्योंकि इसना माशाल्लाह एक सोना जा इसना स्वाद भी जना ता टेस्ट भी इसनी बहुत सोना जायका भी बनना ता मीट विच इसना बहुत ज़्यादा जड़ा ना इसनी खुशबू भी होनी है। ता इसकी असा को पुनसा 1-2 मिनट वास्ते फिर से कि अगला जड़ा ना स्टेप असा दसने हैं इंशाल्लाह। ता गैस ना फ्लेम असा ऊंचा कर छड़िया हूं ता हुन असा इसकी 1-2 मिनट वास्ते भुनी किन्ने। So we're just going to turn the flame up to high now, put the gas on to full, and then we're just going to let everything cook. So you just want to make sure that you keep stirring it in between. You don't want anything to burn because the heat is on high, so just be careful of that. माशाल्लाह माशाल्लाह असानी ग्रेवी जड़ी है माशाल्लाह नाइस भुजी गई है। ता हुन असां बाहन लगे हां थोड़ा जा केवड़ा वाटर ऑप्शनल है 1 टेबल स्पून असां विच बस ता सिर्फ के इस तरह नाल नाइस खुशबू भी होनी है हांडी च ता जायका बिल्कुल इस तरह होना जिस तरह तुसां देगा ना सालन शादियां ना जड़ा होना ओ ता ये तुसां ने अपनी मर्जी है तुसां पसंद करने हो ता बाई किनो जे नहीं ता तुसां ना पाओ ये ऑप्शनल है ता असां ने पसंद करने ना इस वास्ते असां जड़ा विच ऐड कीता। So we've just added in some Kevra essence. I do apologize, I'm not sure what it's called in English, but inshallah if I do find out what it's called I will list it down below for you and let you all know what it's called in English, but in our Zuban it's called Kevra. So we've added that in and that just enhances the flavor. It makes the meat taste really nice, changes up the flavor a bit, and this does taste like the wedding salan that you get, you know, the wedding curry that you get, tastes like that. Amazing. And the gravy is so nice and thick and full of spices, jam packed, full of flavor. हुन सा तकने ना सारा भुजी गया। As you can see, it's cooked now. As you can see, the ghee is bubbling on top, so that means the gravy has cooked. Meat has cooked as well, really well. So we're just going to wait for a few minutes, and then we're going to add in some boiling water. ये असा किंदा पानी जड़ा 1 लीटर ये असा हुन रखसा इसकी बिल्कुल मठी हीट पर के गोश्त जड़ा ना असा ना सही तरह गली जाए ता होई सकना असा कि फिलहाल तसा रखसा आधे घंटे तक ते जे आधे घंटे च गली गया ता ठीक है, नहीं फिर असा कि एक्स्ट्रा रखना पेसी ता जे तुसा कोल है प्रेशर कुकर ता तुसा जड़ा ना इसकी प्रेशर कुकर विच भी 10 मिनट वास्ते जल्दी बनी जाना प्रेशर कुकर रखी सकने हो ता क्योंकि असा कोल इसला हमारे कोल प्रेशर कुकर को नहीं है ता निंजर मशीन है पर उसने जैसा ना बाणिया कि फिर टाइम लगना वा फिर उसने जो कड्डो लट्टो इधर बाओ फिर इस वास्ते जड़ा ना असा ओ निंजर विच ना दसने पिया ता इस वास्ते असा तुसें कि असा हांडी च बनाने आ ता असा कि ज़्यादा टाइम लगी सकना ता तुसें कि बाणे आ कि जे तुसां कोल है वा प्रेशर कुकर फिर प्रेशर कुकर फिर सिर्फ 10 मिनट लगने इस गोश्त की गलने तक असा ने टाइम ज़्यादा लगसी ता तुसां की जड़ा ना बाद विच दसने अगला स्टेप। We've added in 1 liter of boiling water just so that it can help the meat to cook properly and more quickly as well, because we are making it on the gas. It could take a bit longer for the meat to cook. It all depends. Also, you can make this in the pressure cooker as well. We don't have the steel pressure cookers that you can get. We have our Ninja pressure cooker, but we are not going to be using the Ninja pressure cooker. We're just going to be doing it on the gas, so we just wanted to let you know that it could take a little bit extra time. So we're just going to cover this now and let it cook
on low heat. जी माशाल्लाह माशाल्लाह आंडी सानी होगी तैयार तो माशाल्लाह नाइस बनता मज़ेदार तो अज तो माशाल्लाह इस कमाल ही करी छोड़िया अज असा की पूरे 2 घंटे लगे माशाल्लाह इसकी गालने वास्ते तो नॉर्मली असा रखने होने प्रेशर कुकर तो 10 मिनट लगने या 15 मिनट लगने तो गोश्त गली जाना अज तो इसका माशाल्लाह 2 घंटे लगे माशाल्लाह इसकी गलने तो हूँ असा बाने थोड़ा जहा नाल धनिया So guys, it took us 2 hours for the meat to get tender and cook. So I do suggest, you know, putting the meat in the pressure cooker and cooking it. It literally only takes about 10 to 15 minutes for the meat to cook properly and to reach its tender stage. So it took us really long to cook the meat, but it's just like an alternative. Like, I mean, if you really have to make it, you know, make it on the gas as you usually do with your other like meat dishes, make it on the gas. But I don't know why, like today it took absolutely long for it to cook. But yeah, it's turned out really amazing. Just make sure that if you are in a rush and you want to make it quickly, just make it in the pressure cooker. It saves a lot of time. तो नाइस माशाल्लाह थिक ग्रेवी भी बनती है तो माशाल्लाह सोना बनता तो सब कुछ जड़ा इसना बराबर बराबर है असा सिर्फ लून थोड़ा जा और ऐड किया सा किया के लून जिला सा टेस्ट किया सा थोड़ा सा तो लून तुसा जड़ा अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करी किने आए तो बाकी ने माशाल्लाह सब कुछ ठीक सा तो बस असा उसे कि हूँ गैस असा करने बंद तो हूँ असा उसे कि प्लेटा बाई के फिर दसने इंशाल्लाह. So the curry looks absolutely amazing. As you can see, it's bubbling away and the gravy is nice and thick. We've just added in like a bunch of fresh coriander, gave it a good mix, and also it's ready to serve now. It's going to put it into a dish and then show you guys the end result. जे तुसा की माड़ी अज नी वीडियो पसंद आई इसकी लाइक सब्सक्राइब करया ने फैमिली फ्रेंड्स नाल शेयर करया ने तो इस नाल ही मिकी दियो इजाज़त दुआम याद रखा है अल्लाह हाफिज़. Here is some daily salawat for you all. O Allah, O all-seeing, send prayers and abundant peace upon your slave and beloved, our Master Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Prophet of strong sight, and upon his family and companions, and through him enormously grant me insight into you. Ameen, summa ameen.